सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमस्ताराय नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च जगदराय च। ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो षर्षिभ्यो माध्यो नमो गुरुभ्यो परब्रह्मणे श्रुतिमात्रे समस्त ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्याचार्येभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वशिष्ठ विश्वामित्राभ्यां नमः। ओम श्री वाल्मीकि तुलसीदासाभ्यां नमः। ओम श्री व्यास महर्षे नमः। समस्त श्री रामायण आचार्येभ्यो नमः। श्रीराम भक्तेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। तेषां सर्वेषां कृपया उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्यबोधस्य अस्मिन् क्षणे अनुभव सिद्ध्यर्थं पुराणेत्यासोक्त भगवद्भागवत दर्शनानुग्रह प्राप्त्यर्थं सनातन वैदिक संस्कृतेः हैन्दव संस्कृतेः पुनरुत्थान जागरण विश्वव्याप्त्यर्थं तत्कृते समस्त साधक भक्त सेवकानां दीर्घ आयुरारोग्य ऐश्वर्य क्षेम स्थैर्य प्राप्ति द्वारा शत्रु विघ्न निर्मूलन निवारण द्वारा धर्म संस्थापन कार्य नित्य निरंतर दिग्विजय प्राप्त्यर्थम अस्माकमपि आध्यात्मिक शास्त्र अध्ययन काले विघ्न रहित सिद्धि प्राप्त्यर्थं च श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्र से पारायण मध्ये वयं सर्वे करिष्यामहे। आदौ श्री रामनाम संकीर्तनम्। ओम श्रीराम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्य च तस्य जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। Let us chant from Tara Uvacha. Okay. ओम श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रम किष्किंधाकांडम तृतीय सर्गः। श्री महादेव उवाच तारा उवाच ओम देहो चित्काष्ठवद् राम जीवो नित्यश्चिदात्मकः सुख दुःखादि संबंधः कस्य स्याद् राममेव वद। श्रीराम उवाच अहंकारादि संबंधः यावत् देहेन्द्रियैः सह संसारस्तावदेव स्यात् आत्मनस्त्वविवेकिनः मिथ्यारोपित संसारः न स्वयं विनिवर्तते विषयान् ध्यायमानस्य स्वप्ने मिथ्यागमो यथा अनाद्य विद्या संबंधात् तत्कार्याहंकृतेस्तथा संसारोपार्थकोऽपि स्यात् रागद्वेषादि संकुलः मन एव हि संसारः बन्धश्चैव मनः शुभे आत्मा मनः समानत्वम् एत्यतद्गतबन्धभाक् यथा विशुद्धः स्फटिकः अलक्तकादिसमीपगः तत्तद्वर्णयुग् आभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम् बुद्धीन्द्रियादि सामीप्यात् आत्मनः संसृतिर्बलात् आत्मा स्वलिङ्गं तु मनः परिगृह्य तदुद्भवान् कामाञ्जुषन् गुणैर्बद्धः संसारे वर्तते अवशः आदौ मनोगुणान् स्पृष्ट्वा ततः कर्माण्यनेकधा शुक्ललोहितकृष्णानि गतयस्तत्समानतः एवं कर्मवशात् जीवः भ्रमति आभूत संलभम्। ओम शांति शांति शांति। I believe very strongly कि this is the best of the summary of all the Vedanta Jnanam. Here a great thing. Shishya is Tara, Guru is Bhagavan Rama. So she was doing her vilapa, seeing her Mrtapati. First Bhagavan gave the Atma with Swarupa Lakshanas. Then she asked Prashna, this if the self is Chita, Chaitanya, cannot be bound because it is unlimited. Deha is Jada. Then Sukha Dukkha Sambandha Kasya Syat. To whom are these Sukha Dukkha happening? You understand? Now listen. In the inquiry of this question only, answer won't come, but question along with all the problems get dissolved.
वेदांत का एक खूबी है, ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर नहीं होता, प्रश्न के साथ साथ सारे समस्याएं ढल जाते, निकल जाते. So to whom are these samsara? Like who is the one sukhi dukhi? Atma is Shuddha Nirguna Parabrahma Nirupadika. It has no samasya. Deha is Jada. Then who is becoming sukhi dukhi in between? Is it not? Now yesterday we saw two shlokas, very very powerful. We'll just repeat it and go to study 2-3 more slokas today. And maybe in 3 or 4 days this chapter will be done, worthy of repeating study many times. Such topics have already come at least 10 times so far in our Adhyatma Ramayana. And further, before we conclude with Kandam, at least 15-20 times more such type of essence of all Upanishads, all Vedanta comes to us, given to us. That is why this text is called as Adhyatma Ramayana. We believe Puja Gurudev has studied this text and must be fond of it, but could not find time as he was busy in doing Gita and Upanishads only. That's why the Rama Gita, which is at the end, he took it up. He gave lectures on Rama Gita, Sri Rama's teachings to Lakshmana. Again, in that all Vedanta comes. So we can promote this text Adhyatma Ramayana more and more for its content of Brahma Vidya Upanishad Saramsha. Excellent it is. Very, very beautiful. So question is understood. Who is samsari? Who is having the dukkha samsara? The answer is this one. Ki Sri Rama Uvacha. See Ahankara Adi Sambandha Yavatu Dehendriyaihi Saha Samsara Tavadeva Syat Atmanah tu Avivekinah. सो इनमें ही सारा प्रॉब्लम में है, सारा सॉल्यूशन भी है इसी एक श्लोक में. It can be spoken from one side and going to reach to another end. It can start from other side and reach to another end. It can start from this end and reach to that end. In so many ways, this topic can be understood. This particular shloka saramsha. It can be explained like this. Like you are asking, I am answering. Who is a samsari? I am saying, I am samsari. First answer. Samsari is equal to Sukhi Dukhi. I will not repeat it again and again. I use the word only as Samsari. So who is Samsari, Sukhi Dukhi? I am. Which I am? Atma. But Atma cannot be Sukhi Dukhi? Yes. But that Atma, which has developed Ahanta, Mamata, Vidya, Dehadi. That Atma is Sukhi Dukhi Samsari. And why I developed Ahanta, Mamata, Vidya, Dehadi? Only one thing, Avivekina. What is Viveka there? I can be a Sakshi only to Dehadi. I cannot be having the Aham relation and Mama relation with the Deha. In the absence of this Viveka, when the Aviveka prevails, at that time the Ahamta and Mamata with the Dehadi Upadi happen. That time I become Samsari. I become the Sukhi Dukhi. So who am I? I am an Atma. I am the Sambandhi of Ahamka Mamata with the Deha. Therefore, I am the Samsari or sufferer. Therefore, if the samsari sufferer will have to go away, Atma Anubhuti has to come. What is to be done? That Tadatmya with the Dehadi, Upadi, through Aham and Mama should go away. How they are staying the Tadatmyatas? Aviveka. And how the Aviveka goes away? Through Viveka. So, is that Viveka one momentary? No. Viveka done till the total Aviveka goes away. Viveka done till the Aviveka born तादात्म्यता and with ahanta and mamata with the upadhi go away. तब तक विवेक करते रहना. This inner viveka, removing aviveka and avivekavan tadatmya is not like you put a detergent in a cloth and rub it, the dirt has gone away. और घर में कुछ पुराना हो गया तो पताई लगा दी तो घर सुंदर लगने लगा. और कुछ मैल है जमीन पे, थोड़ा सा कुछ चीज डाल दी, एक लिक्विड प्यूरिफायर एंड वॉश इट, गोस अवे.
ऐसा नहीं होता. That because of deep strong vasanas, no, that vivek say whatever we are removing aviveka and trying to remove tadatmyo, again and again it relapses. Like you try to remove the moss from the water, हाथ से ऐसा निकालो फिर से आने लगता है, ऐसे निकालो फिर से आने लगता है. Because of the power of vasanas, power of habits, power of misguidance from others, power of the tempting things from outside, again and again, मजबूरन हमको ना फिर से देहादिपादियों से हम और मम से तादात्म्य करने को होता है. Like I sat down to say that Deha is not me, Deha is not me. Trying to do that Viveka because I'm a Sakshi of that, witness of that. A Sakshi can never be one with the Saksha. Drashta, Drishya cannot be one. Suddenly एक मच्छर काटा. अब immediately मच्छर काटते ही ना, that pain, that fear of the thing immediately makes that aham na deha hasmi thought pushed away, and aham devasmi we become, we immediately react and see कौन सा मच्छर ने काटा, मैं भी उसको काटूं. You understood? You are trying with Viveka to say, I am not Deha. But these vasanas, this again strong habits of trying to protect our Deha and getting bhoga through Deha, कितने जन्म जन्मों से हम लाए ना, इसलिए वो विवेक करने के बावजूद तुरंत नहीं जाता. Then what to do? Should we stop Vivek or what? Continuously do till that goes away. Aham dehosmi, deham mama asti. This anta and mamata with deha goes away. Till that time, we have to go on doing viveka. Okay, the more I am doing viveka, in which I am rejecting the tadatma with the deha adi through an aham and mama, to that extent, the samsari in me, the sukhi dukhi in me goes on reducing. Finally, when totally the rejection of the dehadi tadatma done, then who am I? I am the pure eternal conscious bliss only. And he is not a samsari. Remember, Parabrahman only is a samsari. There is no other samsari. But through the upadhis. And who is he? Me. Therefore, never the problem happens in Vedanta is when the teacher will not able to speak correctly to us, cannot explain correctly. If he has not studied Shastras thoroughly, then he will explain half of it. Then with the half knowledge we suffer. Like just now I said a sentence, कि samsara is only to Brahman, I said. Then you get caught up in this sentence. अरे ब्रह्म को कहाँ से संसार हुआ? अरे other than Brahman, there is nobody. If it is there, then samsara also should belong to him only. And how the samsara to Brahman comes? When he identifies the Upadhi. With the Upadhi identified Brahman, how he became samsari? By becoming Jiva. And who is he? You only. I only. So I, the Brahman, with the Upadhis born out of me, when I get identified, then I only become suffering Jiva. Then same Jiva, when he rejects the Upadhi Tadatmya, he discovers his oneness with Brahman. And really has he become samsari? Has he really become one with the Upadhi? It cannot happen. Then what happened? In the Aviveka, it appearing. Like in the Aviveka of it is a rope, the snake is appearing. Snake never became rope. Sorry, rope never became snake. इज इट नॉट? अविवेक के कारण दिख रहा है वो. आप विवेक कर दिए तो गॉन. विवेक करने से रस्सी सांप नहीं जाता. विवेक करने से रोप दिखता है. The moment rope is in, swamp has gone. Both ways. है ना? One side you inquire about the Brahman, the other side you reject the identity with the Upadhi. Rejecting the identity with the Upadhi is called Vyatireka Sadhana. Trying to identify with the Upadhi Rahita Brahman is called Anvaya Sadhana. They are complementary to each other. Like Karma Yoga, Bhakti Yoga, Ashtanga Yoga, Jnana Yoga. They are complementary to each other to give us mukti ultimately. Here also, Anvaya of identify with Brahma, Vyatireka of rejecting identity with Ipadi, together
as a complementation reaches to the self. So think again and again. I am Brahman. I am identify the upadhis. Then I am a jiva. I am suffering. That is present position now. Now I myself become cool. Now conscious ho jao. When I can by all sadhanas reject my tadatma with the upadhi of aham and mama, I only become or discover my essential self. In the aviveka, the strong notion is born. Yeah, ham dehosmi jivosmi. Never ever I can become jiva or deha. When the viveka is done, that notion goes away. So that is called as true viveka, where the notion that aham dehosmi, deha mama asti is gone away. This is called as atma anatma viveka. I am the atma, I am not the anatma upadhis. The panchakosha viveka वही बता रहा है हमको in our morning तैत्तिरीय उपनिषद. Panchakoshas only are in the matter. Pure conscious Brahman is illuminator of them. He is not identified with them. I am pausing here for you to allow that thought to go inside. So therefore, aham brahmasmi. But through the upadhi tadatmya, aham jivosmi. The upadhis are panchakoshas or three dehas or whatever you call. सारा चीज एक ही अलग अलग टाइम में अलग अलग रूप उसको बताते हैं. Again, I am reading the mantra. Ahankaradi sambandha yavat dehendriyai saha samsara tavadeva syat. For whom anatmanah syad atmanah, sorry, avivekinah. Atmanah means to me, which me aviveki. The aviveki me, I am in samsara. How? By identifying with upadhis. With what? Aham mama bhavana. Then when I do viveka. What is viveka? The upadhis are not me, not mine. In that, the tadatma with the upadhis when goes away, there is no more samsara to me. I am the Brahman. थ्रू आउट लाइफ यही करते हैं. अब इससे बढ़कर कोई वेदांत नहीं है, कोई समझने की बात नहीं है, करने वाला साधना. Some more discussions, questions will be asked by disciple. Guru gives answer. That's it. Catch this point. Revolve around this point throughout night today. कम से कम सोने से पहले एक आधा घंटा 15 आधा घंटा ऐसा सोचते रहे आराम कुर्सी में बैठकर. अहम सच्चिदानंद ब्रह्मा और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा. But am I experiencing it now? No. Why I am not experiencing? Because I am experiencing I am as a jiva. How come I experience as jiva? Because of tadatmya with upadhis. Then why the upadhi tadatmya happening? Is really the aham becoming upadhi ek? No. Only aviveka is creating that sort of feeling. Therefore, strong viveka to be done to remove that strong aviveka. So strongly that definitely naham dehosmi, naham jivosmi experience. One of the abhyasa helps us in sakshi bhava. Sakshi bhava is I am a pure conscious existence. In my presence, all things are happening to the body, but they are not touching me. So sakshi bhav jitna zyada karenge, to tadatma with the hanta mama, with the dehadi upadhi, through the aham and mama bhavana, that goes on. Every day when you do morning, evening, this naham dehosmi, aham brahmasmi, vasanas become stronger. Though the vasana word is bad for it, but in our Prakarana Granthas, Bhagavan Shankara himself uses this word. When the Brahma Asmiti Evam Nirantara Abhyasta Brahmaiva Asmiti Vasana Harati Avidya Vikshepana Rogan Iva Rasayanam. He uses that word, therefore we are also using it. And be attentive. Only theoretically we understood ki aham brahmasmi, naham jivasmi, because Shastra said it will never help us to free from dehadi upadhi tadatmya and jiva bhava and samsara. Actually, really, all the things that are required to be done to detach from the upadhi with the ahanta mamata bhava, we should do, we need to do. उसको ही साधना कहते हैं. Otherwise, we only become vocal philosophers. लिप वेदांतिन कहते हैं उनको. They are the convenient speakers of Vedanta like Hiranyakashipu, Ravana, Duryodhana, Dhritarashtra. Everybody talks philosophy only. Convenient philosophy speakers. They are not really seekers to reach their own liberation. We should not be like that.
नेक्स्ट श्लोक, ये तो एक टॉपिक हो गया. नेक्स्ट बिग टॉपिक इज कमिंग, वन मोर टॉपिक इज कमिंग अप. मिथ्या आरोपित संसारः न स्वयं विनिवर्तते. Okay, this samsara born out of tadatma with aham mama, which is not actually happened, it's only mithya. It doesn't go by itself. Oh. Okay, and not only doesn't go, it becomes stronger and stronger. How? Vishayan dhyayamanasya. More and more we do the dhyana of the Vishaya, that the mithya samsara only grows more and more. Swapne mithya agamo yatha. Just like in the dream, as long as we are in dream, the projected world goes on expanded in projection, appearing to be real. In that, you cannot do anything. Only when you wake up from dream, everything goes away. Therefore, a मिथ्यारोपित संसार अपने आप नहीं जाता है, हमको उसे भगाना है. And what it's all, this is a very sublime topic. I need little more time, patience to study, to talk on this shloka. So tomorrow we'll discuss it. What is that? Mithya aropit samsaraha na swayam vinivartate. Then Vishayan dhyayamanasya. And more we do the Vishaya dhyanam, it is like adding fuel to the fire, that samsara grows only. Now, this has again lot of things. I remember so many shlokas when I study these things or talk to you, but सब काटना पड़ता है क्योंकि टाइम को मन में लेकर. One example I give you. देखो, in this world, to anything we can attach and get lost. Point one. Point two, from any attachment also we can detach also. That facility, that blessing Bhagavan has given, and that we are seeing also in our big life of 200 years, whatever we lived so far, how many things and beings at different periods of life we got attached. At that time, they themselves, the thing are being, appear to be whole life and world for us. है कि नहीं? कोई खिलौनों का समय था, कोई क्रिकेट का समय था, कोई दोस्त का था समय, कोई एक ईटेबल ऑब्जेक्ट था. कितना हम उसके बिना जी नहीं सकते, ऐसे सोचते थे. एंड लुक बैक देम, याद भी नहीं कुछ चीजें. You understand? Everything we can attach to in this world, everything you can detach from us. Because both are mithya. The self can never be attached to anything nor detached. No need to detach. So therefore, whatever the attachment we have the himmat that we can detach from them. When the detachment happens, the samsara goes. So never ever say, I cannot live without this or that. The fact is, everything is because of me, the pure Brahman. I don't depend on them. Such beautiful, deep thoughts that are there in each of shloka. Have patience, give me time, forgive me if I am taking every shloka more time to explain. As I told you, I am also studying all these texts except Bhagavatam first time. So for my contemplation ready also, I am taking little more time. Okay. Now I have placed class at 9 o'clock. So I will conclude now. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय. धन्वंतरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः. ओम भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्तके गणागण रोगपरोद्धंबोलिर मृत्युदार कुठारिकाय नमो नमः. ओम नासे रोग हरे सौ पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा. ओम श्री हनुमद्वीराय नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय.
ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च। श्री राम नाम संकीर्तन राम 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 श्री रामानुग्रहेण परब्रह्मानुभव सिद्ध्यर्थं रामादि समस्त देवतानां गुरूणां दर्शनानुभव सिद्ध्यर्थं सनातन विश्वव्याप्त्यर्थं अस्माकं समस्त साधकानां रक्षणार्थं आयुर आरोग्य क्षेम स्थैर्य श्रद्धा भक्त्यादि सत्साधना संबद्धवाप्त्यर्थं श्री रामचंद्र स्वामिनः अष्टोत्तर शतनामावल्याः पारायणं वयं सर्वे करिष्यामहे। ओम श्रीरामाय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम राजेन्द्राय नमः। ओम रघुपुंगवाय नमः। ओम जानकीवल्लभाय नमः। ओम जैत्राय नमः। ओम जितामित्राय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः। ओम दान्ताय नमः। ओम शरणत्राणतत्पराय नमः। ओम वालिप्रमथनाय नमः। ओम वाङ्मिने नमः। ओम सत्यवाचे नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यव्रताय नमः। व्रतधराय नमः। सदा हनुमदाश्रिताय नमः। ओम कौसलेयाय नमः। करध्वंसिने नमः। विराटवदपण्डिताय नमः। ओम विभीषण परित्रात्रे नमः। ओम हर कोदंड खंडनाय नमः। ओम सप्तताल प्रवेत्रे नमः। ओम दशग्रीव शिरोहराय नमः। ओम जावदग्नि महादर्प दडनाय नमः। ओम ताटकांतकाय नमः। ओम वेदांत साराय नमः। ओम वेदात्मने नमः। भवरोगस्य भेषजाय नमः। ओम दूषण त्रिशिरो हंत्रे नमः। ओम त्रिमूर्तये नमः। त्रिगुणात्मकाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। त्रिलोकात्मने नमः। पुण्यचारित्र कीर्तनाय नमः। त्रिलोक रक्षकाय नमः। धन्विने नमः। ओम दंडकारण्यकर्तनाय नमः। हल्या शाप शमनाय नमः। पितृभक्ताय नमः। वरप्रदाय नमः। जितेन्द्रियाय नमः। जितक्रोधाय नमः। जितामित्राय नमः। जगद्गुरवे नमः। ओम वृक्षवानर संघातिने नमः। चित्रकूट समाश्रयाय नमः। ओम जयंतत्राणवरदाय नमः। सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः। सर्वदेवादिदेवाय नमः। मृतवानर जीवनाय नमः। ओम माया मारीच हंत्रे नमः। महादेवाय नमः। महाभुजाय नमः। सर्वदेवस्तुताय नमः। सौम्याय नमः। ब्रह्मण्याय नमः। मुनि संस्तुताय नमः। ओम महायोगिने नमः। महोदाराय नमः। ओम सुग्रीवेप्सिराज्याय नमः। सर्वपुण्यादिकफलाय नमः। ओम स्मृत सर्वागनाशनाय नमः। ओम आदिपुरुषाय नमः। ओम परमपुरुषाय नमः। महापुरुषाय नमः। ओम पुण्योदयाय नमः। दयासाराय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम स्मितवक्त्राय नमः। ओम मितभाषिणे नमः। ओम पूर्वभाषिणे नमः। ओम राघवाय नमः। ओम अनंतगुणगंभीराय नमः। ओम धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः। ओम मायामानुषचारित्राय नमः। ओम महादेवादिपूजिताय नमः। ओम सेतुकृते नमः। ओम जितवाराशये नमः। ओम सर्वतीर्थमयाय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्यामांगाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम शूराय नमः। ओम पीतवाससे नमः। ओम धनुर्धराय नमः। ओम सर्वयज्ञाधिपाय नमः। ओम यज्वने नमः। ओम जरामरणवर्जिताय नमः। ओम विभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः। ओम सर्व अवगुणवर्जिताय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः। ओम परस्मै ज्योतिषे नमः। ओम परस्मै धाम्ने नमः। ओम पराकाशाय नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम परेशाय नमः। ओम पारगाय नमः। ओम पाराय नमः। ओम सर्वदेवात्मकाय नमः। ओम परस्मै नमः। ओम श्री रामाय नमः. Today only we do Sita Ashtottaram also. Let them be done together. ओम श्री सीतामातु अष्टोत्तर शतनामावलिः। ओम शांताय नमः। ओम माहेश्वर्यै नमः। ओम नित्याय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम परमाक्षराय नमः। ओम अचिन्त्याय नमः। ओम केवलाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम शिवात्मिकाय नमः। ओम परमात्मिकाय नमः। ओम जानक्ये नमः। ओम मिथिलानंददाय नमः। ओम राक्षसान्तविदायिन्ये नमः। ओम रावणान्तकर्ये नमः। ओम रम्याय नमः। ओम रामवक्षस्थलस्थिताय नमः। ओम प्राणेश्वर्ये नमः। ओम प्राणरूपाय नमः। ओम प्रधानपुरुषेश्वर्ये नमः। ओम सर्वशक्ति नमः। ओम कलाय नमः। ओम काष्ठाय नमः। ओम ज्योत्स्नाय नमः। ओम इंदुमहिमास्पदाय नमः। ओम पुराण्ये नमः। ओम चिन्मये नमः। ओम पुंसामाद्याय नमः। ओम पुरुषरूपिण्ये नमः। ओम भूतान्तरात्मने नमः। ओम कूटस्थाय नमः। ओम महापुरुष संहिताय नमः। ओम स्वकार्याय नमः। ओम कार्यजनन्ये नमः। ओम ब्रह्मण्याय नमः। ओम ब्रह्म संशयाय नमः। ओम व्यक्ताय नमः। ओम प्रथमजाय नमः।
ओम ब्राह्म्यै नमः, ओम महत्यै नमः, ओम ज्ञानरूपिण्यै नमः, ओम महेश्वर्यै नमः, ओम समुत्पन्नाय नमः, ओम मुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः, ओम सर्वेश्वर्यै नमः, ओम सर्ववर्णाय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम उदितमानसाय नमः, ओम वासव्यै नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वाच्याय नमः, ओम जगत्कर्त्र्यै नमः, ओम सर्वार्थसाधिकाय नमः, ओम वागीश्वर्यै नमः, ओम सर्वविद्याय नमः, ओम सुशोभनाय नमः, ओम शोभाय नमः, ओम वंशकर्यै नमः, ओम लीलाय नमः, ओम वानिन्यै नमः, ओम परमेष्टिन्यै नमः, ओम त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः, ओम सुन्दर्यै नमः, ओम कामचारिण्यै नमः, ओम विरूपाय नमः, ओम स्वरूपाय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम मोक्षप्रदायिन्यै नमः, ओम भक्तार्तिनाशिन्यै नमः, ओम भव्याय नमः, ओम भवभावविनाशिन्यै नमः, ओम विकृत्यै नमः, ओम शाङ्कर्यै नमः, ओम शास्त्र्यै नमः, ओम गन्धर्वयक्षसेविताय नमः, ओम वैश्वानर्यै नमः, ओम महाशीलाय नमः, ओम देवसेनाय नमः, ओम गुहप्रियाय नमः, ओम हिरण्मये नमः, ओम महारात्र्यै नमः, ओम संसारपरिवर्तिकाय नमः, ओम सुमालिन्ये नमः, ओम स्वरूपाय नमः, ओम तारिण्ये नमः, ओम भाविन्ये नमः, ओम प्रभाय नमः, ओम जगत्प्रियाय नमः, ओम जगन्मूर्तये नमः, ओम त्रिमूर्तये नमः, ओम अमृताश्रयाय नमः, ओम निराश्रयाय नमः, ओम निराहाराय नमः, ओम निरंकुशाय नमः, ओम रणोद्भवाय नमः, ओम श्रीफल्ये नमः, ओम श्रीमत्ये नमः, ओम श्रीशाय नमः, ओम श्रीनिवासाय नमः, ओम हरिप्रियाय नमः, ओम श्रीकर्ये नमः, ओम कंपाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ईशवरण्ये नमः, ओम वेदवत्ये नमः, ओम श्री हनुमदाश्रिताय नमः, ओम सरसामृतदात्र्यै नमः, ओम पट्टाभिरामप्रियाय नमः, ओम श्री सीतामहादेव्यै नमः, ओम श्री सीतामात्रे नमः, पुष्पै पूजय, ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः, महानैवेद्यं मध्यमध्यमपानीयोत्सवभूषणं हस्तपादप्रक्षालनाचमनताम्बूल नीराजनान् दर्शयामि भो। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम रामभार्यायै विद्महे भूजाय श्री तन्नः सीता प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय महादेव आदिशक्ति तत्त्वं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म हेरिमे गुरुपुरा ब्रह्मलोकादा शेषादि व्यासाय विष्णु योगींद्राय तस् बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमावर चंद्रचूड़ भगवान की जय। श्री रामायण महाभारत भागवत उपनिषद गीता ब्रह्म सूत्र योग वासिष्ठ पातंजलि योग दर्शन अध्यात्म रामायण सूत संहिता शिवपुराण समस्त सनातन वैदिक संस्कृति श्रुति स्मृति पुराण इतिहास शास्त्र की जय। श्री वेद व्यास शुकदेव सूतादि भागवताचार्य की जय। श्री वेद व्यास वैशंपायन ख्यात शंकराज ब्रह्म विद्याचार्य की जय। श्री वेद व्यास वशिष्ठ वाल्मीकि विश्वामित्र तुलसीदास आदि रामायण आचार्य की जय। श्री हिरण्यगर्भ कपिल पतंजलि व्यासादि योग दर्शनाचार्य की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद गोविंद जानकी जीवन स्मरण जय जय राम राम। अम्बे अम्बे आदिपराक्ति माता की जय। समस्त श्रोता भक्त साधक सेवक उपासक जिज्ञासु गण की जय। थैंक यू। Yes, friends. Thank you for your patience listening. Tomorrow we'll meet again.